Now these, what are we doing is, we are just activating the gland, okay, the lymphatic glands here. So three fingers, 1, 2, 3, yeah, and then you lift the tap, lift your hand, not too much, and now close your eyes. And I always say, if you do this regularly, you'll be 10 years younger, definitely. जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और लास्ट ईयर हम आपके सामने योग संगम की सीरीज़ लेकर आए थे जो काफ़ी पसंद की गई थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट अरोमा थेरेपिस्ट से, और मैं कहूँ ओनली वन अरोमा थेरेपिस्ट इन इंडिया, मिस ब्लॉसम कोचर मैम। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत थैंक यू सो मच। तो आप आज इस एपिसोड का करने का बहुत अच्छा एक मोटिव था योगा। योगा बहुत इम्पोर्टेंट। तो योगा इंडिया का एक हेरिटेज है। हाँ जी। तो आजकल एक टाइम था जब लोग इसका इम्पोर्टेंस भूल गए थे, लेकिन अभी फिलहाल के दौर में लोग फिर से, यंग जनरेशन फिर से योगा की तरफ जा रहा है, उन्हें इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कितने सालों से योगा से जुड़ी हुई हैं? मैं योगा से बहुत साल से, आई थिंक 30-40 years with योगा में है। I've been doing योगा, मैं योगा में जुड़ा हुआ है। एंड ये क्यों करा, पहले हम सिर्फ ऐसे शुरू कर दिया, बट देन इतना अच्छा है, मेरे सेहत ठीक हो गया, मेरा मन ठीक हो गया, मेरा काम ठीक हो गया, सारा चीज़ ठीक हो गया। एंड ये बहुत इट्स, आई मस्ट से, बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है। एंड आई फ्रॉम दैट टाइम मैं सारा टाइम मैं योगा करते हैं। एंड ये पहले इंट्रोड्यूस करा मेरे एक दोस्त में। he said, why don't you start yoga? So ये से शुरू कर दिया। एंड ये टाइम से अभी तक मैं योगा करते हैं। एंड इट इज़ फैंटास्टिक। एंड लोग बोलते हैं, हाउ आर यू सो यंग? मैं बोला योगा। मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे कि क्या योगा का कमाल है? योगा कमाल एंड अरोमा थेरेपी कमाल। तो इट इज़ रियली, क्यों योगा ना क्या करते हैं, ये मन का ठीक करते हैं, आपका योर एटीट्यूड ठीक करते हैं, आपका फिजिक ठीक करते हैं, एंड आपका ब्रीदिंग ठीक करते हैं, सो ग्लो देते हैं, सारा चीज़ अच्छा है। टू रिमेन यंग मैं रेकमेंड करते हैं योगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि जब तक किसी को अगर फिजिकल इशू है, मेंटल इशू है, तो ही योगा बेनिफिट करेगा, या फिर आप जनरली भी योगा की तरफ जा सकते हैं? योगा इज मेनी टाइप्स ऑफ योगा। वी हैव अबाउट 100 टाइप योगा है, एंड यू कैन डू एनी टाइप ऑफ योगा। एंड योगा इज डिवाइडेड, आई डिवाइड इट इन 3 parts। एक फिजिकल के लिए, एंड ये सारा ठीक करते हैं एनी प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? ये का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एंड एनर्जी जाते हैं, एंड ऑल्सो ब्रीदिंग, इट मेक्स इट ओके, ये ठीक है। दूसरा चीज़ है मन का, बहुत इम्पोर्टेंट है। योर यू कैन आप योगा करते हैं, ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है। एंड तीसरा प्राणायाम इतना अच्छा है। क्यों? आपका यू आर टेकिंग इन द फ्रेश एयर, ब्रीदिंग आउट द गुड एयर, एंड इट इज़ रियली फैंटास्टिक। सो हम प्राणायाम इवन इन ड्यूरिंग द डे, किसी टाइम स्ट्रेस्ड होते हैं और क्या करते हैं, मैं बोला लोम विलोम शुरू करो। सो यू कैन टेक इन, ब्रीद आउट in, I count till 10, okay? Then I hold for 1 minute and breathe out again. You have to hold the one nostril for 1 minute. Just one. Just not 1 minute. Just one. Count till 1. So it's like this. And then again you breathe. You do that about 5 or 6 times, you're going to find straight away आप थोड़ा काम हो जाएंगे, and then आपका काम
आपका काम शुरू कर सकते हैं. So you're going to become calm and you can Calm. start your You're work. calm. Calm, okay. Right, ठीक है. right, right. So this is really fantastic. Alom Valom. It's excellent. I mean, it's very good for you to do it for 5 minutes in the morning, and sometimes they go to 10 minutes. But it's one thing that really calms you, takes you down. It's a fantastic तो exercise. ये ज़रूरी है कि अनुलोम विलोम जो हम ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आप ओपन में ही करें या रूम में भी कर सकते Now हैं? open, you can do it anyway. Open ठीक है if you can manage it open, but otherwise you can do it in your room, in your flat, in your office, anywhere you can do it because it really works. दूसरा चीज़ है what has taught me in this yoga is the breathing I'll talk about. One is you can now just say breathe in. When you breathe in, can you what you breathe? Your stomach comes out or your stomach goes in? I think अंदर होता है स्टमक. Yes. Okay, it's wrong. When you breathe in, you must fill with air. So breathe in, stomach has to go out. Okay. Breathe out. The stomach has to go in. in. So again, Okay. let's do it. Come on. Breathe in. It will take time, but it's really very good, okay, to start. So you breathe in the air and you breathe it out. So this is another one that I really follow regularly. And last is, like when I get very stressed and tension, the one thing I love is when I breathe in and then Okay. so you take out all your tensions and anxiety really outside, lovely. right? So you can breathe in. So that is really It's very good. relaxing. Yeah, very relaxing. ऐसे करते हैं तो बड़ा relaxing लगता है अंदर. And last but not least, yoga क्या करती है? Meditation. It really, it helps to, if you do this 5 minutes of meditation, means just let your thoughts come and go, concentrate on your breathing. You will be 5 or 10, however much time you have. It is going to clear your mind, make you able to focus, it's going to help a great deal. I highly recommend yoga to anyone. If अगर आप फिजिकल वाले आसन नहीं कर पा रहे हैं तो you can do this breathing exercises ये also. ठीक. And there's chair yoga. अभी नया yoga शुरू कर दिया. Chair Office yoga, right? so you Office can sit office yoga. yeah. So that is fantastic. You can do it for your neck and you can do it for your shoulders. You can do your turning ऑफिस में around. हाँ मैं ये अच्छा है कि Yeah. आपको कि आपके आजकल जनरेशन जो हम लोग हैं हाँ जी. आई थिंक 10-10 घंटे तो ऑफिस में ही है 9 Yeah, घंटे जी, ऑफिस में ही जी. है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेन हो जाता है Yeah, नेक में या it's शोल्डर very, में very तो good. इसके लिए कोई अच्छी एक्सरसाइज Yeah, हम बैठे बैठे for कर that, पाते that's हैं. very good. So you put your hand here and you just put it behind and press your head back like this. And then you can come forward. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And so now, so this is a very good one. And the other is just turning around like this. Hold this part of your chair. Okay. And then hold this part of your chair. Oh, this is for that is very good. Yes. And of course, we can lift up our legs and put them like this. Stretch them out. Okay. So that is very good for your stomach. Okay. So there is a lot you can. In fact, this chair yoga is a series, and you can really do the chair yoga. That's wonderful. So there is no excuse. हम जैसे लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं टाइम नहीं है तो ये आप ऑफिस में कर सकती. So you can do it. And then the other thing that I really love is that you can do face yoga. ये बहुत नया है. आई थिंक फेस योगा ना अभी फिलहाल के दिनों में बहुत ट्रेंडिंग भी है. It is, but it's really wonderful and it really brings that glow. Actually, doing yoga, you've got for your full muscles and everything, and blood circulation भी better होता है. Everything ठीक है. So now you've got 43 muscles in your face. Okay. So now we can also exercise every part of our face. So to remain young, we all want to remain young. Yes. And I always say, if you do this regularly, you'll be 10 years younger, definitely. Okay. So to remain young, you can try this face yoga. It's a very simple exercise. Okay, I'll help you. So the first thing is, we take a little oil, okay? So now you don't need to take a little oil. I'll just show you. Take a little oil like this, okay? And you can just take oil, rub it like this, okay? Without oil नहीं कर सकते? No, because you know what, we do want you to stretch your muscles, okay? And put it on your face, around the eyes, because this is the area I'm going to
really work on, okay, like this. And the next thing I want you to do is just tap. This is a wonderful way of, massaging instead of massage. Just tap, 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 because what this tapping does, it increases the collagen in your face and neck. For young people, you're not in so much of a thing, but as you get older, you need to tap to make the collagen go. Okay, that's one. The other one I like to do is under the chin, because we normally, whether young or old, we have this double chin. Right. Yeah. So just do this. This is really nice. Do it about 10, 15, 20, 25. You can go any amount. Okay, whenever you feel like it. So this is very good for that. So once you've done that, now another one is, you get up in the morning before you start, you've got to also take down the lymph. So puffiness here, there, and you want to look very nice and styled and everything else. So the first thing is, we have these collarbones. So we put one finger here, one there, and one. So three, put one on the start of it, one here in the hollow, and one goes on the other. So you just tap. Yes. Now these, what are we doing is, we are just activating the gland, okay, the lymphatic glands here, where it drains out, okay. Just do this. You can do it this way if you find it easier doing it this way. Which way ever you find, you can do it. Okay, you have to just tap it. Just tap it about 50 times, but now we'll only do it a few times, okay. Yeah. That's one. Next is, we want you to, now you've got the oil, massage from here into this area like this, okay. Massage from top to down. Again, do about 20 times, then you do this. Yes. Okay. This is really wonderful. It takes all the lymph, that is there. And then we are going to put, now this will come last. Here we'll take this first, two fingers in front of the ear and two fingers behind, and you will massage like this, down. Yeah, massage like down. this. Yes, like this. Okay, nice. And go right down to the end, like this. Okay. So this, you do another. Then we have a little lump, behind our ear. You'll do that, coming like that. And then we have one here. Okay. Now we finish this. Now we come on to the double chin. So now you are going to pinch underneath here, because it's also got lymph, and you push it down. Okay, pinch. Okay. And push it down. And the others, you can rub it like this. Yes, this. And then we do both hands and put it down. So once you have done that, okay, and then after we've done that, then we will put from here, we will go like this, and from here we will go like this. So this is an area, you have your sinus, you have a whole lot of things, and then we will go like this, okay? ये कोई भी कर सकता है, किसी को? Anyone, no problem. So you just have to do that. So once you've done that, put your oil, done that. Now let's start with our yoga. So to start off first, we have to see that our posture. One of the main reasons that anything is wrong, क्या wrong है, is हमारा posture ठीक नहीं है. So posture पहले है. So ठीक है. So you're going to do some neck exercise. Straight up. Now we're going to do turn left, and then turn right. No, left and right. This is left. This is right for me. Indian. So we left. Yeah. So that's what I'm saying. Okay. From side to side. Do this about 10 times. 5 times here, 5 times. Okay? Because, ये क्या करना, हमारा मुंह ठीक करेंगे, then हमारा neck ना, wrinkles होते जा रहे हैं and सारा. And my देखा, even young people, जवान लोग, ये का neck थोड़ा, gives a problem. That is lack of, the posture is not good. ठीक है? Then ये के बाद up and down, up. Now when you do up, put the
lower thing on top. And then down. Okay, then again up, down, up, and down. Okay, so keep doing that 5 times. Then let's stretch this area, neck. Put your hand like this, one going, yes, and back, stretch. Then again here, and stretch. And stretch. Again, we do this twice, but you will do it 3-4 times. So this is a good stretch. Now see your posture. Right. Now once that is done, now we're going to first start working on double chin. Okay. Now the best way to do that is make your hand into a fist like this and put it underneath your jaw, and then open your mouth. Put your tongue to your palate and open the jaw. Yeah. You have to press this? Yeah, press this in as you're doing that. You feel tension. Yeah? Again. Again. Okay, that is fine. So once you've done that, now we have gone. So this is for our chin. We've tapped up, we've done that. Next is we want to get rid of this part. So you turn your face this side and then pull your mouth in. Yeah, correct. With your tongue here, yeah, correct. You're doing it well. Now the same here. Again. And here. Okay, so that is done. So we've got this done, and then we put it, we'll do again like this, a nice massage. Okay, now we go on to these nose to mouth lines from here to here, which is very common. Okay, so for that, one is you're going to take your tongue and roll it like this. On up and down this line. Now do it this side. So do three times, okay? Now the other one is you're going to put your hands under your cheekbones. These are your cheekbones, two fingers, and then you're going to smile. Yeah, correct. Again. Okay. Now we want this whole area is is the cheeks. So we're going to put one finger here on this lower part by the little higher on the line. Yes. Yeah. There. Now you're going to smile, hold for 10 and release. Okay, like this. Release. Slowly release. Do this twice again. Okay. Slowly release. Now what this does is this is working this muscle. Okay. Now we come on to little higher. Yes, there. Not so close. Little lower. Okay, little there. Now again you're going to do this smile. Okay. Release again. Release. Okay, do that. Then we're going to go not on this area, just a little lower than that. Come. Then smile again? Yeah, wait, but no, little lower than the nose. Nose is there, yeah. Now go a little, yeah, yes. Now do it there. Again, smile. You have to press it also. Yeah. Now what has happened is you'll find a stretch here, you'll find a stretch. Now we're going to do this nose, and the last stretch you'll find it here. Put it here underneath and just smile.
Okay, release. Again, smile. Okay. So now you worked your cheeks, you worked these muscles, okay, everything like this. And now we go to the most important part is your eyes. Okay. So the eyes, first is, you'll have that little curve, you'll put one finger there, one here and one here. So three fingers. 1, 2, 3, yeah? And then you'll lift the tap, lift your hand, not too much, and now close your eyes. You felt the stretch? Yeah. Now open it again. Close your eye, open it, close your eyes. Okay, do that one more time. So this is good for, the droopy lids that fall down. So this is lift it up. Yeah? Oh, wow. And then now you get puffiness sometimes under the eyes. And especially in the morning. Okay, you've eaten a heavy meal, थोड़ा बहुत खाना खाया रात को और लेट सोया और क्या है, so ये थोड़ा puffiness होते हैं. So ये शुरू करना. Put this here, put one finger here and one finger there. Yes, like that. Good. Now close your eyes. Open. अबे बंद करो. And open. ठीक है? Yeah. So this is very good to take out any water retention, क्या पानी or anything retention. So this is good for that. So this is fantastic. The others put your here. थोड़ा lines आते हैं ना जैसे. So put one there and one here. Yes, and now close your eyes. Close. Open. Close. Open. Close. Last but not least, ये forehead के लिए ये lines आते हैं. So you're going to put one hand here, another on top, और एक हाथ, and press it down while you open your eyes like that. Raise your eyebrows. So press this down and raise your eyebrows. Down. क्यों ऐसे सिर्फ eyebrows raise करते हैं, lines आते हैं. So you press it down. There is a thing and put the thing. So exercise होती है muscles को. ठीक है? That is one. And last but not least, एक time हम आप पता है मैं पता है हम बोलेंगे oh my god time नहीं है मैं कैसे करेंगे वो हो ये जाना वो जाना. तो मैं बहुत simple exercise करेंगे. ये कर दो. आपका vowels करना मेरा ऐसे A big and loud A 2 टाइम और 3 टाइम करो. ए देखो ये सारा स्ट्रेच. ई ऊपर स्ट्रेच. ई आई देखो ये से आई ई आई. ओ करके सिर्फ ओ नहीं करो, थोड़ा टाइट करना. ओ अंदर लेने लो. ओ लोग ना सेक्सी माउथ कर पाउट ऐसे ओ ठीक है. ओ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ए बी ए आई ओ यू. अच्छा फ्लाइंग केसेस दे दो. यू ओके ठीक है. यू ठीक है. सो ये करना ये बहुत अच्छा है. ये करेंगे प्रॉमिस 10 साल यंग हो जाएंगे. तो कितना टाइम तक करना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअसली कि 10 साल तक यंग दिखने के लिए? आपको कब तक कितने टाइम में रिजल्ट दिखेंगे आपको? रिजल्ट 1 हफ्ते में हो जाएंगे. ओके. एक हफ्ते लोग बोलेंगे व्हाट हैव यू डन विथ योर फेस. क्या करा देखो अभी आप देखो आपका मुंह शाइनिंग हो गया. ओके ये सारा खून आते हैं एंड ऑल दिस इज एंड इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन ऑल्सो. स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. सो यू विल फाइंड इट हेल्प्स लॉट. एक टाइम में उठते हैं सारा चीज़ मैं बोला इससे सो इट ये ठीक होते हैं. जो स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पिगमेंटेशन का ये सब इस सब से भी बेटर फेस योगा से वो भी चीज़ हो सकती है. फेस योगा से ठीक अच्छा इट हेल्प्स बट देन आप थोड़ा ये चीज़ लगाना ऑल्सो नो लाइट करने के लिए. सो आप यू कैन पुट दूध और थोड़ा आलू
आलू ग्रेट करके थोड़ा दूध के अंदर और ऐसे ऐसे रख दो ये के ऊपर। और आपका ऑयली स्किन है, देन योगर्ट, ये आलू बेस्ट वेज आलू काट के एंड देन डिप इन योगर्ट, ठीक है, एंड ये ऊपर डाल दो। कहाँ पिगमेंटेशन, वेट करो 20 मिनट, निकाल दो, एकदम ठीक, कम होते ठीक, कम हो जाएगा कुछ टाइम में। बट किसी टाइम बहुत पिगमेंटेशन है, मैं बोलते हैं हमारा क्लाइंट का, जाके डॉक्टर का पहले पूछो, मे बी स्टमक प्रॉब्लम, मे बी एमीबियोसिस, मे बी यूट्रस, सो ये ठीक हो जाएंगे, ये हमारा ऊपर से ठीक कर सकते, बट अदरवाइज सिंपल वाला हम ये लाइटनिंग ज़रूर हो सकती है के साथ, ठीक है। ठीक है, तो आपने फेस योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर मैम से बहुत कुछ टिप्स ले लिए हैं। आई एम श्योर आपने साथ साथ करा भी होगा, तो आई थिंक कुछ दिन अगर आप रेगुलर करते हैं फेस योगा को तो उसमें आपको थोड़े टाइम में इसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है कि आपको रेगुलर करें उसको। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करो फिर लगे टाइम नहीं है तो बाद में कर लेंगे। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे हमें टिप्स दिए, इतने अच्छे आसन्स बताए। बहुत थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।